गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम डिस्कसन करवा एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस एंड इट्स मीनिंग। बिजनेस कौन आ मीनिंग कौन। ह्यूमन बीइंग्स आर कंटिन्यूअसली एंगेज इन सम एक्टिविटी। आमे माने सबु बेले किसी ना किसी एक्टिविटी कौन अच्छे इनवॉल्व अच्छे एंगेज रही इन सम एक्टिविटी और अनदर टू सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। आम मानकर वांट्स केते अच्छी, कार अच्छी भल सर्विस टे करी, क्या जोड़ा भल बिल्डिंग करी, भल बिजनेस करी, एमती किसी आमर वांट अच्छी अनलिमिटेड वांट्स। एवरी डे वी कम अक्रॉस द वर्ड बिजनेस। से छोट बिजनेस हो बड़ बिजनेस हो, आम बिजनेस विषय सब शुणुचे ये वर्ड आम सब शुणुचे बिजनेस द वर्ड बिजनेस शुणुचे। आउ कौन शुणुचे बिजनेसमैन, बिजनेस आउ बिजनेसमैन डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। द बिजनेस हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेसटा कौन गोटे गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन। बिजनेस रे कौन हुए कंटिन्यूअस आउ रेगुलर प्रोडक्शन हुए। आउ कौन हुए गुड्स पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुए। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जार गुड्स नहीं मनकर गोटा जेरक्स दुकान रहा कि गोटे तुम नेट कैफ रहा सी कौन दौर तुमको सर्विस दौर कि गोटे कोचिंग सेंटर रोचे सर्विस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन पे दौर फॉर सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स ह्यूमन नीड्स। तुम जो आवश्यकता अच्छी जहाँ नीड्स अच्छी ताकू फुलफिल करने ये सब सर्विस दौर। सो ऑल ऑफ अस नीड फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। आम सब कौन खाद्य वस्त्र बासगृह सब जगह आम दरकार हो। सो वी ऑल्सो हैव मेनी अदर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स टू बी सैटिस्फाइड। खाली कौन खाद्य वस्त्र बासगृह दरकार हो अलग जिन दरकार हो। वी मेड दिस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स। आम क्या आनुचे शॉपकीपर। सो द शॉपकीपर गेट्स फ्रॉम होलसेलर। शॉपकीपर कौट आनुचे जो छोट दुकान सी होलसेलर टू आनुचे। The wholesaler gets from the manufacturers. The shopkeeper, the wholesaler and the manufacturer are doing business. से मैंने सब कौन कर बिजनेस कर मैन्युफैक्चरर हो शॉपकीपर हो कि होलसेलर हो सब बिजनेस कर एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बिजनेसमैन। जेहेतु से बिजनेस कर कौन कहे बिजनेसमैन। किसी डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस तुम जड़े अच्छा लुइस हेनरी से गोटे डिफाइन कर बिजनेस को। बिजनेस हूँ कौन गोटे ह्यूमन एक्टिविटी डिरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्यूरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अच्छा ये जो बिजनेस रहा तार किसी क्यारेक्टरिस्टिक्स अच्छी तुम मानकर जमी गोटे क्वालिटी अच्छी प्रॉपर्टीज अच्छी से बिजनेस किसी क्यारेक्टरिस्टिक्स अच्छी। फास्ट जिन हूँ कौन से कौन हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस किसी जिनसर कौन हम ट्रांजैक्शन हो तो तुम किसी दब किसी नब। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ वन टाइप ऑफ क्यारेक्टरिस्टिक्स गोटे वन क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विथ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन पाई एक्सचेंज होची फॉर मनी और मनीज वर्थ। जी बिजनेसमैन सी कौन है मनी पाई कर तुम मनी रिटर्न रे जा पाउछ जमी तुम वांट फुलफिल करने। सो यहाँ फर्स्ट पॉइंट होची एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन सेकंड पॉइंट deals in numerous transactions. कौन सी इन बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ए रेगुलर फीचर। सर्विस हो कि किसी जिनस हो गुड्स हो यहाँ गोटे रेगुलर फीचर। सो ए बिजनेसमैन रेगुलरली डील्स इन सेवरल ट्रांजैक्शन एंड नॉट जस्ट वन और टू ट्रांजैक्शन। गोटे दुटा ट्रांजैक्शन पर बस जाऊँगी कौन बिजनेस हम ना से बिजनेसमैन हम ना न्यूमरस कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन हो। आउ गोटे जिन हूँ प्रॉफिट जदि प्रॉफिट न हो बिजनेस कहीं कर। सो प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। The business is carried out
द बिजनेस इज कैरिड ऑन विथ ए मोटिव टू अर्न ए प्रॉफिट जड़े बिजनेस करुच्ची प्रॉफिट पाई जदि प्रॉफिट हेनी से बिजनेस कहीं कर सो मेन मोटो कौन टू अर्न प्रॉफिट द प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर द सर्विस ऑफ ए बिजनेसमैन तो प्रॉफिटा कौन वन टाइप ऑफ रिवार्ड से गोटा काम करुच्ची गोटा केते लेबर करुच्ची ना से कौन तार रिवार्ड कौन प्रॉफिट देन आउ गोटे फीचर हूँ बिजनेस स्किल्स फॉर इकोनॉमिक सक्सेस समस्त बिजनेस करेंगे गोटे बिजनेस करने गोटे स्किल दरकार सो एनी वन कैंट रन ए बिजनेस टू बी ए गुड बिजनेसमैन वन नीड्स टू हैव गुड बिजनेस क्वालिटीज बिजनेस स्किल्स आइडिया ए बिजनेसमैन नीड्स एक्सपीरियंस तार एक्सपीरियंस भी थी दरकार एंड स्किल्स टू रन ए बिजनेस खाली जहाँ पाखे मनी थी कैपिटाल थी से बिजनेस कर ना तार एक्सपीरियंस थी दरकार जब एक्सपीरियंस न स्किल्ड वर्कर आने देन आउ कौन अच्छी रिस्क सबुथिरे रिस्क अच्छी रिस्क बिजनेस रिस्क अच्छी लाभ हो पारे क्षति भी हो पारे प्रॉफिट हो पारे लॉस भी हो पारे सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एंड बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज सम रिस्क सच एज रिस्क ऑफ लॉस सपोज तुम गोटे बिल्डिंग तैयार करदेल कि गोटे दुकान करदेल दुकान बिजनेस देन नेक्स्ट पॉइंट हूँ बायर एंड सेलर बायर एंड सेलर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज ए मिनिमम ऑफ टू पार्टीज गोटे बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम कौन हम दुईटा पार्टीज थी दुईटा पार्टी थी दैट इज ए बायर एंड ए सेलर सो बिजनेस इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कौन वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर गोटे एग्रीमेंट मुझे फीचर्स तुमको दूसरी तुम एति टाँग दब एमती गोटे जो ट्रांजेक्शन होटा हूँ गोटे वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बा एग्रीमेंट देन कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन बिजनेसटा कौन कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन सो द बिजनेस एक्टिविटी मे बी कनेक्टेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जदि प्रोडक्शन किसी है प्रोडक्शन कौटी हम इंडस्ट्री हम सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोले कहे द इंडस्ट्री में भी सेटा प्राइमरी हो पारे सेकेंडरी हो पारे प्राइमरी माने कौन जोटी मनकर आम गोटे मोबाइल किणुचे तार जो रूट पार्ट गुरा रहा से कौन कौटी गोटे तो प्रोडक्शन होता देन आउ कौटी गोटे आसेम्बली होता तो प्राइमरी कौटी जो प्रोडक्शन है आसेम्बली जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री देन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द बिजनेस एक्टिविटी मे बी कंसर्न विथ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिना मार्केटिंग रे किसी बिजनेस चल पार मु गोटे जो कंपनी करदेली तादेह प्रोडक्ट लॉन्च कली तुम केन जान टीवी देख रेडियो शुण कि न्यूज पेपर देख कि कौट होर्डिंग लगे देख सो द बिजनेस एक्टिविटी मे बी कंसर्न विथ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन व्हिच केस इट इज कॉल्ड ए कमर्शियल एक्टिविटी ये सब जिनस गुरा कौन सब कमर्शियल एक्टिविटी से मार्केटिंग हो डिस्ट्रीब्यूशन हो मागणार किए करेंगे ये सब जिन कौन कमर्शियल एक्टिविटी देन आमर आसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केतरा फॉर्म अच्छी माने से गोटे लोक करुच्ची कि दुईटा लोक पार्टनरशिप कर कि गोटा ग्रुप ग्रुप केते लोक मिसिक कर सब जिन गोटे फॉर्म अच्छी सो इफ यू आर कंसीडरिंग एंटरिंग टू इनटू ए बिजनेस or are involved with an existing business there are a number of different ways to structure your business तुम्हारा बिजनेस कैटेगोरीटा कौन तुम केम जान द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर सोल प्रोप्रिएटरशिप माने कौन निजे मालिक गोटाए लोक थे सो देन अच्छी कौन पार्टनरशिप अच्छी लिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशंस यही सब फॉर्म्स अच्छी सो आम डिस्कसन करिया जे सोल प्रोप्रिएटरशिप कौन ए सोल प्रोप्रिएटरशिप इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आदि कौन हुए द प्रोप्रिएटर ओन्स द एसेट से निजे मालिक तार ही सब जगह एसेट ऑफ द बिजनेस एंड इज पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस डेब्ट्स हो ऑब्लिगेशन हो सबू रेस्पॉन्सिबिलिटी किए से गोटे लोक So personal assets can be seized to meet obligations and liabilities of the business.
So if the proprietor uses a business name other than his or her own name, then registration of the name will be required with the province. All income of a sole proprietorship is taxed. तार जेतिक इनकम हम से सब जगह कौन लगे टैक्स एज पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स जेहेतु से गोटे लोक तार पर्सनल इनकम टैक्स रेट लगे तार. सो द एडवांटेज ऑफ ए सोल प्रोप्रिएटरशिप इज दैट इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू स्टेप अप एंड ऑपरेट. गोटे लोक हेले गोटे मालिक हेले कौन तो कंट्रोल करने सुविधा. जदि तुम ग्रुप हेले कि पार्टनरशिप चलेला से बिजनेसटा किसी दिन जीव तांको भितर किसी प्रोब्लेम हो जाए. गोटे रही कौन हम सोल प्रोप्रिएटरशिप हेले कौन एटा लॉन्ग टर्म चलो जहाँ भी डिसीजन नब तार किसी प्रोब्लेम ना किंतु तार कौन थी दरकार बिजनेस स्किल थी दरकार नॉलेज थी दरकार. सो द डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द ओनर्स. तुम आगू को पढ़ेबी क्लास रे लायबिलिटीज कौन. देन आम पार्टनरशिप विषय जानिया. पार्टनरशिप कौन व्हेयर टू और मोर पीपल कंबाइन when two or more people combine their resources मैं को आर पाखे 50,000 अच्छी तार पाखे 50,000 कि 60,000 अच्छी आम कंबाइन कर गोटे बिजनेस आम स्टार्ट करें. where two or more people combine their resources in a business their relationship will probably be considered a partnership. Then if partners do not enter into a formal partnership agreement, their relationship will be governed by the Partnership Act. जदि तुम दी जन पार्टनर रोचे कि दी जन जहाँ पार्टनर रोचे किसी गोटे फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट रे से कौन कर एंटर करूना तेरे से रिलेशनटा कौन हम क्या द्वारा एक्ट हम गोटा तुम अच्छी पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट लिखाई थो आर 80% तार 70% प्रॉफिट केते ये केते शेयर नब से ये सब डिटेल्स तुम लिखाई थो डिटेल्स लिखाई थो ना कौन एड्रेस कौन ये सब लिखाई थो. सो ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इम्पोर्टेंट इफ देयर आर ओनली टू पार्टनर्स बिकॉज विदाउट एन एग्रीमेंट इफ वन पार्टनर डाइज देन द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स. जदि जन मरीगला तो पार्टनर भितर देन द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स व्हिच मे लीड टू adverse tax consequence. And the advantage of a partnership are that it is simple and inexpensive to set up and operate there. And there are possible tax advantages such as कारण जेहेतु दी जन अच्छे. So people often enter into a partnership until they determine how successful the business will be and they review whether they should incorporate. आर पुणी डिसएडवांटेजेस भी अच्छी. द डिसएडवांटेज ऑफ ए पार्टनरशिप इंक्लूड दैट ईच पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप एंड विल बी बाउंड बाय द एक्ट्स जहाँ एक्ट अच्छी तादर से बाउंड थे ऑफ द अदर पार्टनर्स इन कनेक्शन विथ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप. देन नेक्स्ट क्लास में तुम डिस्कसन करिए आम जॉइंट वेंचर कौन. जॉइंट वेंचर